Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Here once again I have come up with the third part of the chapter. We are reading A Long Walk to Freedom, an extract from the autobiography of Nelson Rolihlahla Mandela. After the end of the page number 31, we have read about how he was actually besieged by the he had been pleasantly besieged by the dignitaries of the world who have come over there in Pretoria, the administrative capital of South Africa, which was a few years ago, few decades ago, and the part of the area was the base or the place of white supremacy, and how it has been changed, and now it is a place, a part become which is filled with rainbow colored of different peoples from different nations. And he told us that this is for the very first time in the history of South Africa that they have been given this privilege to host different peoples in his country. And he taught us that from the experience, out of the experience of the extraordinary disaster that he termed it, the oppression, the apartheid policy, should come into existence, a society that all humanity should be proud of. He talks about these things when he came out to speak on the stage, and he told us that the sun shall never set on such an extraordinary freedom or liberty achieved by the peoples of Africa. And he told that just a few moments later, all they were awestruck by the jets and troop carriers of the South African military forces. That he told us that it was not just a pinpoint precision of the military force, but that it was a sign of demonstration of loyalty towards democracy. And he also told us that he was saluted by the chief of army and police and others, but he was not unmindful of the way just a few years ago that he was arrested, rather saluted by the same personals. But they pledged their loyalty to democracy right at this moment. And he told us that it was a symbolic day for him, because people were singing the two anthems of the nation. And another thing he told us about to the end of this page, that he told us about the history of how Anglo-Boer War after the Anglo-Boer War, Boers were the Dutch colonists, and the English bitter war was fought between these two countries, colonists. And before his own birth, and as a man of 80 decades, the white-skinned people of South Africa patched up their differences. Means they came up to the conclusion and on an agreement that we stopped fighting among themselves. They decided to stop fighting against themselves and erected a system of government that was that he told us about, that this was a racial domination against the dark-skinned people. For example, the structure created from the basis of one of the harshest and most inhuman societies in the world ever known. So he talks about the apartheid policy that was one of the harshest, and that has never come in existence before this in the world. So here up to this part, he told us that, but at this moment when he was speaking, that apartheid system was completely overturned by the people and replaced by a non-racial democratic government that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of their colors, without the difference, without discriminating on the basis of their differences. The government which is being installed, the inauguration for which he has gathered the different peoples of the world, is recognizing in terms of the if we talk in contrast with the apartheid government that was in practice. Now from here we are going to start.
That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my peoples. Now this day has not come just he has imagined and it came in his life. Rather, he has, as we have been told about his life story, that he has spent 27 years himself in a prison. He is now talking about that this day, that the day he is talking about, he is talking about, come about through the unimaginable sacrifice, something that is not imagined by common people. Sacrifice, yani qurbani of thousands of my people whose sufferings encourage sufferings, yani the pains, the afflictions through which they go on, they underwent, yani jin mushkilat se wo guzre hain, aur jo courage hai can never be counted or repaid. These sacrifices and the sufferings and the courage the people of Africa shows can never be counted and never be repaid by, is what he is saying now. I felt that day, उस दिन मुझे एहसास हुआ, as I have on so many other days, जैसे कि मुझे दूसरे कई दिनों पर महसूस होता था, that I was simply the some of all those African patriots यानी those who love their country, हुब्बुल वतन जिसको कहते हैं, ठीक है, patriotic songs आपने सुने होंगे, of all those African patriots who had gone before me, जो उन तमाम का मैं क्या था, some यानी conclusion या total था, that long and noble line ended and now begin again with me. ठीक है, अब उसने क्या कहा था कि वो जो African patriots who had gone before me, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, that long and noble line, that those people who have sacrificed their life for the sake of other people's, so that other people live their life with dignity and freedom. He's talking about that these people, the line of those people have ended and now begin again with me, and it started again with me, yani Nelson Mandela. I was pained, I am feeling the pain that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought yani actually it was when we hit metal and malleable, trying to transform the shape of a metal, that's called wrought actually. But here done, what their sacrifices had done, if they were able to see, he is wishing them. ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है क्या, the policy of the apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. Wound, जख्म. अब apartheid किसका policy था, policy of apartheid and apartheid created a deep, बहुत ही गहरा and lasting, जो बहुत लंबे समय तक रहेगा, wound in my country and my people, मेरे लोगों में एक जख्म पैदा किया है. All of us will spend many years, हम बहुत सारे साल गुजारेंगे, if not generations, अगर नस्लें ना हो तो, recovering from that profound hurt. Profound यानी a lot of intense hurt, the pain that we have gone through, जिससे हम गुजरे हैं, उससे क्या करेंगे, निकलने में हम कम से कम generations, बहुत सारे साल गुजार देंगे, लगेंगे हमें, अगर नस्लें ना हुई तो, एक नस्ल ना गुजर पड़े तो उससे. But the decades of profound oppression and brutality होता है जालिमाना जुल्म तशद्दुद जिसको कहते हैं. Profound यानी a lot of oppression and brutality had another unintended, deep and strong effect. ठीक है, उसका और एक क्या था लो, unintended, जो हमने बिना सोचे किया हुआ है और गहरा जो है और एक मजबूत असर है उसका. And that was what produced the Oliver Tambo's. देखो, क्योंकि सख्ती में जाकर एक इंसान बनता है, जैसे कि कुरान का भी कहना है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, इंसान को सख्ती में, जिगर में पैदा किया. आप बोलोगे बायोलॉजी में कहते हैं कि वोम में पैदा होता है मदर के, लेकिन सख्ती में पैदा होता है हकीकत में इंसान. तो देखो ये सेक्रीफाइस करने वाले, कुर्बानी देने वाले लोग, ये खुद कह रहा है, लिटरली बात सोचने वाली है. इस सख्ती ने क्या किया, द ओलिवर टेम्बूस. अब ये द ओलिवर टेम्बूस क्यों लिखा है, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल्स हैं ये सारे, who were all resisting against a part. आपको बोला होगा कि the definite article is used when a proper noun is used to show the family, जैसे कि the Mughals, इस तरह से आपके हिस्ट्रीज में होता है, the Ghoris, the Ghaznavis, इस तरह से होता है. ये सब क्यों, क्लास शो करता है या लाइक माइंडेड पीपल शो कर रहे हैं यहाँ पे. द ओलिवर टेम्बूस, इस सख्ती ने ओलिवर टेम्बूस जैसे लोग पैदा किए. द वॉल्टर सिस्लूस, इसके जैसे आदमी पैदा किए. द चीफ लूथलिस, इस तरह के आदमी पैदा किए उसने. द यूसुफ डेडूस, द ब्रैन फिशर्स, द रॉबर्ट्स
सोबोक्विस ऑफ आवर टाइम, हमारे ज़माने के जो रॉबर्ट सोबोक्विस है, उन सबको पैदा किया किसने? इस सख्ती ने पैदा किया, जो उन्हें पता नहीं था, अनइंटेंडेडली अनइंटेंशनली वो सब पैदा हो गए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ऐसे लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली करेज हिम्मत रखते थे। विजडम, विजडम अक्लानियत को कहते हैं। विजडम की कोई इंग्लिश में उसका सही मीनिंग मुझे नहीं आया। हिकमत कहते हैं, अरबी में कुरान में है, पढ़ के देखें। कहते हैं कि युतिल हिकमत मन यशा फ़क़त ऊतिया खैरन कसीरा, सो का तो खुदा से हिकमत तंग देख उसको खैर कसीर अदा किया, जैसे कि करोड़ों मिलियंस दिया हो। लेकिन हिकमत की भी एक उसूल है कि वो मसलहत के तहत नीचे उतरता है, इनफिनाइट है उसका वर्ल्ड जस्टिन। चलो ठीक है, विजडम अक्लमंदी यानी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के लोग थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम, हिकमत, अक्लमंदी एंड जनरोसिटी। जनरोसिटी यानी दोज पीपल हु डोंट कीप डंपिंग थिंग्स, या जिसको आप कहते हैं कीप होर्डिंग थिंग्स। आप इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि जमा करते रहते हैं, ऐसा नहीं थे लोग। That they are like may never be known again, शायद इनके जैसे और लोग कभी, देखो लाइक माइंडेड बोला था हमने, इनके जैसे लोग फिर कभी जाने ना जाएं। Perhaps it requires such depth of operation, बल्कि इतना सख्त it requires, देखो रिक्वायरमेंट होती किसी भी चीज़ की, किसी कुछ पैदा करना हो, किसी भी चीज़ के लिए। हमने वैसे कि आपको बोला था कि अगर साइंस में अगर आपका एक मकसद होता है, सबसे पहले जहन में आता है लेकिन सबसे आखिर में हासिल होता है। जैसे कि आप सादा एग्जाम्पल लें तो फुटबॉल खेलना है, तो मेरे जहन में आया फुटबॉल खेलना है, लेकिन अब मुझे वो जो मेरे जहन में आया है उसको हासिल करने के लिए ग्राउंड चाहिए, प्लेयर चाहिए, खेल का तरीक़ा चाहिए, रेफरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब मिल जाएगा। तो आखिर में जाकर उन सबको जब पूरा करते हैं तब आपके जहन में जो आया है वो हासिल होता है। इसी तरह इस ऑपरेशन चाहिए। परहैप्स इट रिक्वायर्स डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये किरदार हैं, लाइफ में कैरेक्टर्स देखना चाहिए, ना कि ये रोडमैन, बैडमैन, गुडमैन, ये सब थर्ड क्लास है। तो रोल मॉडल्स होना चाहिए। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जम्स, एज वी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले भी बताया कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज वन ऑफ द रिचेस्ट है। तो माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जम्स, जम्स जो कीमती पत्थर होते हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो उसके ज़मीन के नीचे हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, मगर मैं जानता हूँ हमेशा से कि इसकी असली दौलत जो है इसके लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। फाइनर, बिल्कुल फाइन है, प्योर एंड ट्रूअर, और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा उनके अंदर क्या है? सिंसियरिटी, लॉयलिटी की बात कर रहा है ये है। अब यहाँ से क्या कर रहा है? इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स क्या होते हैं? एसोसिएट्स या फेलोज, दोज हु आर फाइटिंग, दोज हु आर वर्किंग फॉर ए कॉज, या क्रू मेंबर्स आप जिसको कहते हैं, उसकी तरह। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, दिस कंपनी यानी दिस फ्रेंड्स यू कैन ऑल्सो से, इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न, मैंने सीखा इनसे। क्या सीखा? दैट आई लर्न इट द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैंने हिम्मत की मीनिंग सीखी। टाइम एंड अगेन यानी बार बार, ये फ्रेज होता है। टाइम एंड अगेन यानी बार बार, बहुत बार। क्या देखा है? आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ, मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, just an idea is the ideas matters and results speaks, just आगे एक फ्रेज यूज करेंगे तो एक आइडिया के लिए जान दे देते हैं। मतलब तो इस्लाम के लिए देखो, इफ वी as far as Islam is concerned, there is much more sacrifice than any other religion in the world। तो आपको देखने की ज़रूरत है। just have a look at our infallibles, मासूमीन इमाम्स, देखें आप क्या किया उन्होंने। just in the contemporary world, just look at इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, शहीद मोहम्मद बाकर सदर, शहीद मोहम्मद बाकर निमर, ठीक है, शेख निमर निमर। देयर आर एन नंबर ऑफ, यानी लॉट ऑफ profound examples in Islamic history. I have seen men stand up to attacks and tortures. Stand up means they stood in the way of resisting up to attacks and tortures, जो अटैक उन पे हमले होते हैं, जो टॉर्चर किया जाता है, विदाउट ब्रेकिंग यानी बगैर टूटे, यानी कीप रेजिस्टिंग, नॉट गिविंग इन, यानी वो डिफीट, हार ना मानते हुए। शोविंग स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस। अब रिजाइलेंस क्या होता है? बाउंसिंग बैक फ्रॉम द वोन्स या द सफरिंग्स यू हैव गॉन थ्रू। उसने से गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं होता, गिर गए, गिर कर उठना कमाल होता है। रिसाइलियंस उसी को कहते हैं। एबिलिटी टू फाइट डिफिकल्टीज, ओवरकमिंग और रिकवरिंग फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। कुछ भी आपके ऊपर असर हो गया उससे बाहर निकल आने को कहते हैं रिजाइलियंस। स्ट्रेंथ, आप देखो इसने क्या किया? एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोविंग द स्ट्रेंथ एंड रिजाइलेंस, दे डिफाइज, जो बिल्कुल इनकार कर देता है, रेसिस्ट करता है द इमेजिनेशन, इंसान की इमेजिनेशन को भी क्या कर देता है? बेकार बना देता है, यानी उससे आगे निकल जाता है।
I learned that courage was not the absence of fear. देखो अब इसने सीखा कि absence of fear नहीं होता है, ठीक है। ये बात हम बहुत जगह पे कह सकते हैं, लेकिन शायद ये गलत होगा अगर कहना, क्योंकि इमाम अली से कि एक शख्स ने आकर इमाम अली से कहा कि आप तो बहुत बहादुर हो, आप किसी से नहीं डरते हो। तो इमाम ने कहा नहीं, तुम गलत फहमी के शिकार हो गए हो, मैं डरता हूँ। अब किससे डरते थे ये अब हम और अच्छी तरह से शायद नहीं जानते हैं, इसलिए तो हमारी ये हालत है। द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि करेज का ये मतलब नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ फियर हो, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, मगर उस पर काबू पा लेना, उस पर फतह पा लेना, यानी उस डर पे। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर इंसान वो नहीं कि जो डरता नहीं, बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर, उसको जो जीत लेता है, उसको फतह कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin. कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है कि जो किसी के कलर की वजह से उसको नफरत करे, नामुमकिन है। और his background, जो किस बैकग्राउंड से आया, और his religion या उसके रिलीजन पे, this is what called in your history books persecution, ठीक है। People must learn to hate लोगों को हेट करना चाहिए, सीखना चाहिए नफरत करना भी। देखो, and if they can learn to hate, अगर वो नफरत करना सीख लेते हैं, they can be taught to love. जस्ट इज द केस ऑफ प्योरिफिकेशन। जब तक कि प्योरिफिकेशन सेंट ऑफ द गटर्स की बात की होगी आपने, शेख नूरुद्दीन वली 9th क्लास में बात की होगी। प्योरिफिकेशन, वो 12 साल गार में रह के आया है, तो जब तक कि आप प्योरीफाई करने की बात करें, प्योरिफिकेशन तब तक होता ही नहीं, सवाल ही उसका पैदा नहीं होता जब तक कि गंदगी नहीं होता। यानी हमें भी इमाम ने कहा कि अपने दोस्तों के साथ रहो, लेकिन उसकी तरह ना बनाओ, प्योरीफाई करो। कुरान का भी यही कहना है, फ़अलहमहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इंसान के अंदर दोनों भरे हुए हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जो प्योरीफाई कर लेगा वो कामयाब है। तो इस तरह से लिटरेचर खुल के पढ़ें, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें। यहाँ पे बोला अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जाए तो मोहब्बत करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट इज़ अपोजिट। मोहब्बत जो है वो ज़्यादा नेचुरली आता है नफरत से, खुदा कसम। लेकिन इंसान देखो कहाँ पहुँच गया है। इवन इन द ग्रिमेस्ट, ग्रिमेस्ट यानी सीरियस, द ग्रिमेस्ट, ग्रिम होता है सीरियस टाइम्स इन प्रिजम, बहुत जब कैद में था मैं, व्हेन माय कॉमरेड्स माय फेलो बीइंग्स, मेरे साथी जो थे, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स। पुश्ड आवर लिमिट्स का क्या मतलब है? टू आवर लास्ट लिमिट ऑफ बीइंग बियरिंग पेन, दर्द बर्दाश्त करने आखिरी हद तक हम पर टॉर्चर किया जाता है। वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स यानी मेरे आखिरी हद तक पहुंच जाता था कि बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, मैं ग्लिम्स देखा था, एक झलक सा, हल्का सा झलक एक गार्ड में कि कितना जुल्म हो रहा है इंसानों पे, सोच के उसको देखता था मैं। तो परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, एक लम्हे के लिए ही, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी, बस मेरे लिए इतना काफ़ी था कि मुझे ये दोबारा यकीन दिलाता था, एंड कीप मी गोइंग, की कीप गोइंग ऑन, स्टॉप, डोंट गिव इन, कीप जस्ट स्टिक टू योर गन्स एंड कीप योर ओपिनियन। मुझे ये उम्मीद दिलाता और मैं अपने काम पे जारी रखता था। आई नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप, यानी मैंने कभी छोड़ देने का फैसला तब नहीं किया। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो अच्छाई है वो क्या है, लो एक आग की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इन लाइफ, जिंदगी में, एवरी ह्यूमन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, उसके पास दो वाजिबात होते हैं। Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, और अपने लोगों से भी obligations के ऊपर वाजिबात होते हैं। Just take a break and think about this saying from the Holy Prophet, that he says, if we have any obligation towards people, then this is the best thing you should follow in your life. That the Prophet said, one who gets up early in the morning and is not concerned about the affairs of other Muslims is not a Muslim. And we are keeping our big titles, Maulana, Alana here, but we are not caring about other people's. Just once again, hear this saying from the Holy Prophet. One who is not concerned about the affairs of other Muslims is not a Muslim. That's how difficult it is now. Obligations according to, अब यहाँ पे people, his community, his country, in a civil and human society, human यानी इंसानी मुआशरे में क्या होता है, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations, inclinate यानी tilted, inclination यानी रुझान, झुकाव के हिसाब से वो करता है, and abilities, and you should bring up यानी foster
डेवलप करना चाहिए दोज काइंड ऑफ एबिलिटीज इन योर सेल्फ. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, अफ्रीका जैसे कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल both of these obligations. People from such people like him, from the background of black Negroes, it was impossible to perform these obligations he is now talking about. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. जो क्या करते हैं एक साउथ अफ्रीका में मैन ऑफ कलर who attempted, जो कलर जिसका ब्लैक हो, अगर वो कोशिश करता है कि कलर who attempted to live as a human being, उसको क्या होता है, was punished and isolated, उसको जुदा किया जाता है, उसको सजा दिया जाता है. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, take a twilight existence of secrecy and rebellion. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, साउथ अफ्रीका में जो आदमी इस तरह की ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, लोगों की तरफ अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या किया जाता है लोग, वॉज इनएविटेबली यानी बाय नेसेसिटी, लाजिमन उर्दू में, रिप्ड ऑफ यानी काट के फेंक दिया जाता है फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, अपने घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ, उसको ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करता है, वॉज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ ए पार्ट, बिल्कुल अलग होकर उसको ज़िंदगी गुजारने की मजबूर करता है. ए ट्विलाइट एक्जिस्टेंस, ट्विलाइट यानी बिल्कुल ट्विलाइट असली क्या होता है, शाम का जो वक्त होता है, जो थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, उसके बारे में बात है, बहुत ही मतलब छोटी सी ज़िंदगी यानी ट्विलाइट. यहाँ पे इसको मैं फिर से देखूंगा इंशाल्लाह. बहुत छोटा ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करते हैं. ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, लिमिटेड यहाँ आप कह सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, बिल्कुल सीक्रेट, किसी को पता ना चले, और रेबेलियन और बागी कह के उसको ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर करता है. I did not in the beginning choose to place my people above my family. ठीक है, पहले जब मैं ज़िंदगी में जाता था तब मैं अपने लोगों को अपने फैमिली के ऊपर नहीं रखता था. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son. ठीक है, मुझे यानी अपने obligations पूरा करने से कौन रोक रहा था कि obligations as a son. यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ता हूँ. I did not in the beginning मैंने शुरू में क्या किया, choose to place my people above my family. मैं ये नहीं करता था कि अपने फैमिली के ऊपर क्या अपने पीपल को रखता था, मगर क्या हुआ, above my family, but in attempting to serve my people, लेकिन जब मैं लोगों को खिदमत करने की कोशिश करता था तो क्या होता था लोग, I was prevented, ठीक है, I found, मैंने ये पाया that I was prevented from fulfilling my obligations as a son. ठीक है, अब मैं लोगों को देखता हूँ तो अपने एज ए सन में अपना ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड, तो मेरे पास दोनों परेशानियाँ होती थी. आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री. देखो, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं एक हंगर के लिए यानी मेरे अंदर भूख नहीं था, तो क्या था, टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से जिससे मैं जान सकता था उस तरह मैं फ्री पैदा हुआ था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, अपने माँ के इर्द गिर्द हर्ट्स के यानी जो कुटिया है उसके इर्द गिर्द घूमना. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम्स दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो गाँव से नाले गुजरते थे उनमें नहाना. फ्री टू रोस मिलीज यानी कॉर्न्स है, ये कॉर्न्स जो मक्के होते हैं उसको रोस्ट करना. अंडर द स्टार्स इन राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो बड़े बड़े भेल होते थे उनके पीठ पर चढ़कर सवारी करना. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. देखो, जब तक कि मैं क्या करता रहा, तो आई ओबेड माई फादर, मैं अपने वालिद की कहा मानता था, क्या करता था, इताअत करता रहा. इन अबाइडेड एंड पाबंद रहा बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जो मेरे कबीले के कस्टम्स रस्म रिवाज है. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड. मुझे कभी इंसानी कानून ने, कभी जो खुदा के कानून ने ट्रबल नहीं किया. मगर यहाँ से आगे क्या होता है, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस क्लास. होप यू हैव एंजॉयड इट. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट इंशाल्लाह. Thank you. Here I am going to end this class. Thank you once again. Thank you very much.